Now, this was a stock which did very well during an IPO. It had a very good earnings pullback यहाँ पे, a big EP run, a big stage two, ठीक है? Then had a stage three distribution. Now it's into a stage four. Okay. Now what are we doing is जो first principle thought analyze कर रहे थे, right? Ideally, now what are you thinking? Now you have seen a stage two, stage three, and a stage four happen. Okay. Now I'll start running it bar by bar. Okay. At each bar, I'm now probably going to stop. Okay. Or you ask me to stop. Each bar, we are now going to go through a different visualization element, either for acting, not acting, or deciding when to act. Okay, is that clear? What I'll do is, अभी यहाँ पे I have a scenario analysis of a chart right now. Okay, at each bar now you would have some thoughts कि भाई stage 4 पे है, यहाँ पे resistance break है, this is where I'm looking at support. Each and every analysis that we have, right, will break it down of why we are thinking that way. Okay, why did that thought actually even come out? तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक देख रहे हैं, why is that resistance really relevant? Okay, if I'm looking at say like a swing breakout or a multi-year breakout, why is that resistance really important? Okay, if I'm looking at a support buy, why is it really important? The next, what do I actually need to see for me to act in a particular manner? अगर गैप अप देखना है या कुछ स्ट्रिंग एक्शन देखना है, डू आई नीड टू सी अ हाई वॉल्यूम बार? If I need to see a high volume bar, is that the only validation I need to do for that particular action? Okay. We'll run through the exercise. At each bar, I'll keep on probably will me and Chirag will probably keep on prodding on each bar by bar question. Make sense? Clear? ठीक है. अच्छा, मेरे पास एक ही स्क्रीन है. I don't have a multi-screen setup right now. So I'm assuming it as a yes. You can unmute yourself. That is okay. Most of you were in a silent zone only. ठीक है. Me and Chirag are also just acting as normal traders. Even I don't remember this chart so much. I'm also playing this literally real time with you guys. ठीक है. Now this is the context we have. थोड़े दिन पहले आई थिंक से इट हैड अ बैड रिजल्ट. दिस वाज से अबाउट Jan 25. ओके. माय कॉन्टेक्स्ट इज कि भाई ये ऑलरेडी स्टेज 4 पे है. इट हैज हैड अ बैड रिजल्ट, बट द फॉलो थ्रू आई थिंक अभी जैसे लास्ट वीकेंड पे जो ये पार्टिसिपेशन डिस्काउंटिंग वाला था, यू कैन प्रोबेबली स्टार्ट अप्लाइंग इट फ्रॉम हियर. ओके, दिस इज ए पॉइंट जीरो वेर वी आर स्टार्टिंग आउट फ्रॉम. ओके, लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर. अभी एनी ओपिनियंस? कुछ है इसमें ट्रेड करने लायक अभी? You नहीं, want to अभी तो short नहीं this No, लग रहा. move? no, No, नहीं not अभी right now. I don't think so. No short? no. No, 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 no. no, no, not really. No, no अच्छा, question. नो. चिराग शॉर्ट करोगे? हेलो. शॉर्ट करने लायक अभी नहीं है. जो लो बना है अपना अर्निंग्स के बाद, राइट, जो लोअर लो है, मैं ये उसके रिकॉर्ड में देखूंगा कि अपना जो फ्यूचर में प्राइस जा रहा है वो किधर जा रहा है, मतलब कहाँ पहुंच रहा है वो. so say तो मैं एक लाइन यहाँ 1460 ड्रॉ kind कर, of becomes a decisive zone. या आई विल Yes. ड्रॉ अ लाइन हियर एंड आई विल सी दैट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. चलो मैं लॉन्ग के पर्सपेक्टिव में ही देखूंगा, लेकिन मैं उसके रिकॉर्ड. चलो, आई एम ड्रॉइंग दिस जोन हियर. ठीक है. हाँ हाँ. अभी 1460 के आसपास लाइन है. ओके. नाउ व्हाट चिराग्स परसेप्शन इज कि अगर यहाँ पे इफ इट कंसोलिडेट्स और इट गिव्स अ शेकआउट, दैट इज व्हाई वी आर प्रोबेबली देन स्टार्टिंग मोर इनटू अटेंशन, बट स्टिल नॉट अ बाय. करेक्ट? यस, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो मैं यहाँ इस चार्ट पे डिफरेंट देख पा रहा हूँ. लास्ट के 4 बार्स जो है उसमें वॉल्यूम इज अ लिटिल हायर ये कंपैरेटिवली. वाला. रेड वॉल्यूम्स आर हायर. उसके हाँ. हाँ एकदम लास्ट के जो 4 बार है, हाँ. but still the price is not covering the distance. So I will see that what is happening in that case. That is one thing that I will notice at this. करेक्ट. ओके, परफेक्ट. ठीक है. एनी न्यू एडिशंस गाइस? No. None. Mm-hmm. ठीक है. ठीक है, तो अभी तुम लोग को ये ना बॉटम में लग रहा है ना शॉर्ट वाला लग रहा है, राइट? दिस इज जस्ट अनट्रेडेबल फॉर यू. Hmm. Yeah. Yeah. Okay. Okay. So what if it say comes up to say a 10 or 21 and it creates a short for me? Would you guys short then? What is the next action you would want to visualize here? I will visualize. अच्छा, मैं रुक के बोलता हूँ पहले. अदरवाइज सारे वही बात बोलेंगे. शॉर्ट का तो विजुअलाइज नहीं होगा अनुराग भाई, करते नहीं है तो.
What हाँ else? ठीक है, चल लॉन्ग लॉन्ग बता दे, व्हाट डू यू वांट टू सी टू डू अ लॉन्ग? लॉन्ग के लिए थोड़ा अगर जैसे प्रीवियसली बनी थी 3-4 कैंडल बैक टू बैक ऐसे ग्रीन बनी जाए पॉकेट पिवट हाई ये वॉल्यूम के वाला, साथ, और उसके बाद 2-3 दिन, यस, उसके बाद 2-3 दिन अगर नैरो रेंज मिल जाए देन आई कैन बट वो गो। स्टेज वन नहीं होगा तुम्हारे लिए? नहीं। स्टेज वन आ, नहीं। आई थिंक मैं वहाँ पे कंसोलिडेट अगर होगा एंड 1530 सॉरी 1530 का अगर ब्रेक है विद गुड वॉल्यूम देन आई प्रॉब्ली ट्राई एंटरिंग देयर. Okay, so for how long? Should it happen, say we are somewhere in mid of Yeah, Feb? yeah, if I see some Okay, would you consolidation. not see it for the whole of March? Would you not see it till April? Till when do you want the time consolidation also to happen? Visualize both in terms of price and time. And I think it was because he's coming out of stage 4 and needs some time. So I think I would say like अभी क्या है, March. Yeah, I think I would say March. Yeah, Okay, ठीक है, yeah, few weeks. चलो yeah, till March and यहाँ पे ठीक है, चलो yeah. let's do. एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि हम्म, बिकॉज वी जस्ट हैव वन स्टॉक, राइट? तो हम लोग कई बार इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि मतलब लाइक वी वांट टू डू सम एक्शन, right? हाँ So we will say that we want to buy, we want to sell, we want to short, or we want to do something, right? But in real market you will have hundreds of, हाँ हाँ, well, right? we are And just you taking this won't context. even you won't even imagine that you can do something here real market में, right? So that is something which is different in this case. नहीं आएगा, रुको देखते हैं, चलो Can I we add move. मेरे something here? लिए yeah definitely. I think all of us here would wait till at least 20-25% lows से ऊपर जाएगा. Then it makes a setup and only then we'll think about trading in real time. That is how I would see it as a very classical, in a very classical way, no? हाँ, so I वही think waiting for the stage 2 to happen ना कुछ आगे, Exactly. Stage 2 के लिए wait करेंगे, right? waiting for stage 2, okay, If I ठीक है. see, एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि I think that the fall had been very severe in recent situation, right? तो यहाँ पे मुझे इस स्टॉक में बाइंग का कोई सेंस नहीं दिखता है पर्सनली हम्म, at this part. I will rather think from the perspective of कि इसको अभी थोड़ा सा फ्लैटन होने दिया जाए. यदि मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूँ एक नॉर्मल सिचुएशन में, आई वांट कि ये थोड़ा सा विड्थ गेन करे, से फॉर एग्जांपल अप्रैल तक कंसोलिडेट करे, मे बी मई तक बिना ज्यादा डिस्टेंस कवर किए हुए नीचे की तरफ, एंड देन आई विल कंसिडर इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी मे बी, राइट? सेकेंड थिंग आई विल से कि इसमें एक ही एक्सेप्शन ये हो सकता है इफ इट क्रिएट्स एन ईपी, बिकॉज ईपी जो है वो प्रीवियस स्ट्रक्चर को नल एंड वॉइड कर सकता है. अदरवाइज आई डोंट सी अ रीजन टू एक्ट इन दिस स्टॉक इन एनी टाइम तो इन ठीक द है ना, ये रिसेंट. अपना फेब में आया था, ओके, रिजल्ट, Hmm. द नेक्स्ट रिजल्ट विल बी इन अप्रैल में. Yeah. Yes, ओके, सो यू आर रफली अबाउट 2-3 months अवे फ्रॉम दैट. yes, but yes, yes. sorry, a question. क्या EP के लिए do we need a substantial, let's say, base or something like that for it to be to us to validate that EP, और कि या फिर एक अच्छे earnings से और EP gap up हो गया तो you could potentially take that trade? सो व्हाट वी I will आइडियली, say हाँ ठीक है, चिराग बोल. actually अनुराग का डोमेन है because he is a better EP trader than me. मैंने अप्रैल में बहुत सारे स्टॉप लॉसेस खाए थे and he was printing money, right? So just to intervene उनके थोड़े से डोमेन में मैं encroachment कर रहा हूँ, लेकिन बट पॉइंट मेरा ये मानना है कि EP should come into a stock which is neglected. मैं मतलब निग्लेक्ट का मतलब सिर्फ प्राइस बाई वाइज निग्लेक्ट नहीं होता है, मतलब वो ऐसी चीज जिसको कि कोई नहीं देख रहा है, ना बायर देख रहा है ना सेलर देख रहा है. एक मिसकंसेप्शन ईपी का क्या है कि सेलर देख रहा है तो चलेगा, बायर नहीं देख रहा हो. इट इज अ ह्यूज मिसकंसेप्शन, राइट? स्टॉक्स में फेजेस होते हैं जब लोग उसके ऊपर कंसंट्रेटेड होते हैं, पूरा रिटेल इसके ऊपर कंसंट्रेट होता है. नेटवेब की प्रॉब्लम क्या थी कि एक बहुत मतलब जिसको कहा जाए कि वीआईपी स्टॉक था, बिकॉज इट हैड अ वेरी गुड मिसमराइजिंग स्टेज टू, और उसके बाद जो आपका डीप सी का आया तो इट हैड अ वेरी टेरेबल फॉल, right? So it was not a stock which was not in limelight. Whether it is falling or whether it is rising, it was always in limelight. So that is something I feel कि dead stocks works better, right?
या डेट के बाद थोड़ा एक्यूमुलेशन हो रहा है, दैट आल्सो वर्क्स बेटर, बट आई फील दैट इट शुड बी समथिंग व्हिच इज नॉट इन लाइन, राइट? दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन इन दैट केस. And this is not an EP. This is an earnings cap up. Simple. That's it. अभी तो ठीक है. We'll get to that distinction where it Sure. is. Okay. I'm just proceeding अभी के लिए. Okay. अच्छा, यहाँ पे now it is slightly coming below your value line, ना चिराग, जहाँ पे mark. हाँ. So I will visualize it in two ways right now. एक तरीका ये मैं visualize करूंगा कि what if it can go up and what if it can go down from here. जो शेक आउट हुआ ना, वहां पे मैं सिर्फ ये विजुअलाइज नहीं करूंगा कि व्हाट इफ इट कैन गो डाउन. दैट कम्स वेरी ऑब्वियसली टू अस. Visualize one important piece of visualization is thesis, antithesis, and synthesis. Think from the perspective of what the thesis says. A breakdown happened and the price will go down. Right? That is thesis. Antithesis is think exactly opposite of that. Right? ये हम लोगों के कोर्स में 9th मॉड्यूल में आने वाला है, बट आई एम स्टिल बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट विजुअलाइजेशन, इसलिए मैं थोड़ा इस पॉइंट पे बताना चाहूंगा कि थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग एट दिस स्टेज. एकदम उल्टा सोच के एंड देन सी कि व्हाट सीम्स मोर प्रोबेबल. क्योंकि माइंड जो है ना, वो एक तरह का मतलब अपनी माइंड एक बहुत यूनिक मशीन, राइट? आप एक चेहरा देखते हैं, आपको लगता है इस चेहरे को मैंने देखा है. इस समय तक माइंड क्या करता है कि थाउजेंड्स ऑफ फेसेस में से उस चेहरे को नोट करके वो ये ढूंढने की कोशिश करता है कि उसको उसने कहाँ देखा है, उसका नाम क्या और क्या क्या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है. तो माइंड जितना आप चार्ट देखते हैं उसको स्टोर कर, राइट? और वो ढूंढने का प्रयास करता है कि कौन सा ज्यादा बार मैंने देखा है, राइट? So the point is, when you are looking at something, visualize from all perspective. Visualize what happens if it goes sideways, what happens if it goes up from here, what happens if it goes down from here. तभी जबकि आपका दिमाग ये कह रहा है कि it should only go down और वो ऊपर नहीं जा सकता है. Still visualize. That will help you in one thing. एक precise skill develop करने में वो help करेगा, वो है shakeout buying में help करेगा बहुत मैसिवली आपको ट्रेड. चिराग ने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है पहले ही स्टॉक के. सो अच्छा, वी कॉल इट वेरी स्ट्रांगली एज द ट्रैप ट्रेडर सिंड्रोम. ओके, दिस वाज काइंड ऑफ अ लैंडस्पेक्स काइंड ऑफ अ आइडिया, वेरी स्ट्रांग. ठीक है. इट इज अंडरस्टैंड द पॉइंट इन द चार्ट where a certain set of buyers or sellers will be under so much pain that they can't that they'll act urgently. ठीक है. तो से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जब ब्रेकआउट स्क्वाट होता है, ओके, व्हाट हैपेंस? इमीडिएटली इट गोज अप, इट गोज डाउन. ओके, नाउ समवन लाइक अ दीक्षित विल कट इट ऑफ. ही हैज नो अदर ऑप्शन. करेक्ट. आया मेरा वन, अभी 0.5% अगर उसका एमए है, तो जैसे ही 1 से 1.5 तक का भी अगर नीचे आया भाव से, आई एम आउट. आई एम नॉट गोइंग टू वेट आउट. ओके, नाउ आई हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर फ्लो. Correct? That if a action is happening A, then consequent action B is a very high probability. Okay. So if it squats, Dikshit is now a trapped trader. Correct? If the breakout succeeds, who is the trapped trader? The seller is the trapped trader, because I could have sold it a lot more ahead at a bigger price, but now I am trapped and now I have sold it faster. So we call it as a trapped trader syndrome. Look at it from the other point of view. Exactly जो antithesis point of view है ना, correct? अगर buyer ये point पे generate नहीं हो रहा है, is there a point where the seller becomes more active? Or does he panic at any point? What will be the maximum pain scenario for the other guy that you are working for? Okay, now if everyone is saying that it is still going to go down, right? At what point does it actually become bullish? That it has become so bearish that your antithesis now start becoming bullish on the other side. Correct? What you said, all of you guys said that this is in a stage 4. यहाँ पे suppose एक value zone आ भी रहा है. At what point will it, अगर if I'm going only long, right? What point does it make me into a buy? करेक्ट. ये अगर मैं कंट्रोल आर करके चार्ट ऊपर कर दूं ना, मोस्ट ऑफ यू विल जस्ट सी अ फ्लैग हियर. दिस विल बी योर टिपिकल फ्लैग ऑन द लॉन्ग साइड. Correct. मेरे लिए वो फ्लैग नहीं होगा. हाँ, बट व्हेन यू विल बाय दैट पुल बैक फॉर द 10 ईएमए. हाँ पुल बैक बाइंग कर. ठीक है, फ्लैग नहीं, पुल बैक हाँ पकड़ लो जो भी. हाँ ठीक है. पुल बैक.
Okay, now the thesis that we are working on, let's do this. ठीक है, first principle thought ही डालना है ना. Let's take the antithesis thought. ठीक है. Now we are trying to now find a point where it gets so bearish that it starts becoming bullish. ठीक है. Or any other idea that you come out with. I'm just playing it again. Okay, does it change? Probably wait for a pullback to 15, 7, and So probably you're already pull back bullish and then now. break. Yeah. Dikshit? No, not yet. Not yet. Okay. But this zone is becoming exciting for you, na? ये 15, Yes. 30 Yes. to 70 zone kind of. ठीक है? Yes. Let's see. We are not even in stage 2 yet. If you go Yes. through our journal, all our trades were only in stage 2. We are still looking at a Hmm. stage 1 stock, okay? Hmm. Not say stage 4 ए, stock, not even stage 1 अभी तक. एक लाइव चार्ट बताता हूँ, सी प्रो स्टार, Uh, राइट, इन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अप ट्रेंड में बेस किया, अभी ये डाउन ट्रेंड में साइडवेज है ना, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बेस इन एन अप ट्रेंड इन अ प्रेजेंट सिचुएशन. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, जहां वो नीचे गया एंड देन इट रिविजिटेड दैट जोन, क्या आप उसको विजुअलाइज कर पाएंगे? नहीं, I don't know. I think others are confused. Confusion. कंफ्यूजन. ओके, ठीक है, ये पहले ये इसको पहले करते हैं, देन आई ये तो ये ले लेते हैं चितक, नहीं तो ये चार्ट चेंज. हाँ हाँ, डेफिनेट डेफिनेट. Okay, I'm moving ahead. अभी nothing yet. No, I don't think No. so. Nope. वही जोन पे है. Yes. Now Um, nothing. Nothing. No, Move ahead. nothing. तुम्हारा वैल्यू जोन हो रहा है. Anything which you can buy. Now say for example, अगर ये वाला जो जोन है ना 1309 Hmm. पकड़ लो या ये वाला जोन पकड़ लो. Okay, if Hmm. it goes down and comes up, can I take a trap trader kind of an entry? So say for example, it comes down, say roughly below 1303, which is this low. ठीक है, 1290 तक जाता है, फिर ऊपर जाने लगता है. Can I buy in that 1303 zone? Does that become like a fake shakeout? Shake up. I It can think be bought as Can an I can pilot position there? yeah, it can be bought as an anticipation that it might go up because that is a good, like the stock is not going down below those levels. तो वो support level हो सकता है वो. Like Okay. anticipation buy Even कर your सकते हैं. breakout entry is part anticipation. No? Yeah, correct. बट अनुराग भाई इतने दिन से वो इसी जोन में है, अगर ब्रेकआउट भी हुआ फिर भी इतने सेलर्स है कि पैनिक क्रिएट होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, वैलिड. सो यू आर एज्यूमिंग कि भाई अभी तक सप्लाई एब्जॉर्ब हुआ, डिमांड नहीं है. Hmm. तो पार्टिसिपेशन डिस्काउंटिंग में बोल रहा हो कि भाई सेलर्स को और बेचने के लिए स्टॉक्स नहीं बचा है, बट बायर के को खरीदने के लिए पैसा नहीं डालना है. करेक्ट, yes. दैट्स व्हाट Correct. योर थीसिस टुवर्ड्स स्टेज 1. Hmm. Correct. So if you link your participation discounting with stage 1 and stage 2, what is the difference? The difference is not in supply absorption, it's in demand pickup. Correct. Hmm. Supply has been absorbed also to a very large extent in stage 1. mhm. Hmm. Stage 3 में इसका absolute उल्टा है. Correct. अभी सप्लाई आना, डिमांड खत्म हो रहा है वहां पे. करेक्ट, there are no new people who want to put more money at that value. Hmm. Correct. I'm looking at that. That's what the first principle says. I'm going in. Hmm. ठीक है, क्लासिक स्टेज 1. हाँ, अभी आया शेकआउट एंट्री. Breakout. Mhm. एनीथिंग आई कैन डू हियर? आई कुड हैव प्रोबेबली, अगर ये शेकआउट होता है, आई कुड हैव सीन समथिंग लाइक दिस. This is exactly, if I reverse this, becomes a short entry, what Kolamagi would do. Hmm. Yes, Mhm. correct. Yeah. कहते हैं कि किया क्या है, दिस इज जस्ट लाइक द नॉर्मल, जो तुम लोग का ब्रेकआउट अगर फेड होता है,
ये अगर मैं ब्रेकडाउन फेड ऐसे रखूं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट गोस थ्रू, Yes. Yeah. करेक्ट? Right. Yes. I'll go ahead. Okay. ये जो शेकआउट आया ना, इट इज हाँ बिकॉज ऑफ मार्केट, वो टैरिफ वाला जो था उसका शेकआउट है। हाँ ठीक है, 7th April. which was the हाँ best day to buy actually. Mhm. हाँ, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट But very valid point that this would not be the best stock to buy. Hmm. या। Yes. Mhm. Okay, as on that day, because a lot of stocks moved after that, this is still in हम्म stage. Mhm. हम्म Okay, so the हम्म participation discounting thesis gets valid. कि भाई everyone has sold but people are not buying yet. Man. Correct. So this may be a good investment thesis but not a good momentum thesis yet. ठीक है. Now I will trade it differently if I have say 20 crore, but I'll trade it very differently if I want 1 crore. Correct. So I'll go ahead. Okay, results approaching. Okay, now it gaps up. ठीक है. यहाँ पे Mhm. an earnings entry comes in Vivek if you want to. Yes. ठीक है. Yes. Yes. Unfortunately मेरे मार्किंग्स है यहाँ पे तो दिख जाते हैं बट या. Yeah. चलो I'll go ahead. ठीक है. I bought this, sold this. Okay, this happens the next day. Now, Hmm. okay, I'll move ahead. कुछ है अभी तक? Any entry that you guys want to take? Now this is where you are. What do you want to see on the next 2-3 days for you to trigger an entry? Or is Some it I sort of still think not tradable? compression. probably Or still not tradable? I think that 1 to 2 tight days में make it tradable। मैं अर्निंग ऐप पर ज़्यादा एंट्री लेता नहीं हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि अगर हम देखते हैं, ये अभी स्टेज 1 में आया है, इसने 50% फॉल किया था, वहां पर गंदी अर्निंग्स आई थी। तो अगर हम अर्निंग साइकिल के तौर पर देखते हैं, अर्निंग साइकिल के बेसिस पे, तो हम्म. इतनी जल्दी आ, वैसे मैं कहूंगा कि ये एक एजम्पशन होगी, लेकिन इतनी जल्दी ईपी आकर और इतनी जल्दी अर्निंग साइकिल अभी पॉजिटिव में आना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखते हैं. आना क्यों नहीं चाहिए वो नहीं पता. ये मे वाला है ना. ये देख, पैट इज वेरी गुड. 30 है, Hmm. हाईएस्ट पैट रिपोर्ट किया है. नहीं, अगर मैं उस टाइम पर बैठा हुआ हूँ, ये देख रहा हूँ गैप अप, तो मन में ये नहीं आएगा कि अभी क्योंकि मतलब कि एक ये पिछली अर्निंग ही बहुत ज्यादा बेकार आई थी। अब इतनी जल्दी हम्म. अर्निंग साइकिल रिवर्स होकर पॉजिटिव में कैसे आ जाएगा? बंदा ये नहीं सोचेगा? अच्छा, तो तुमको लग रहा है कि अर्निंग्स अच्छा आएगा तभी स्टॉक भागेगा करके? वो मैं वैसे तुम्हारा ही अंडरलाइंग थीसिस है कि जब तक अर्निंग अच्छा नहीं आएगा तब तक स्टॉक भागने का मतलब नहीं है. इट विल फेड ऑफ. नहीं, द थिंग इज सर कि कैटलिस्ट तो चाहिए ना, कि अगर अर्निंग्स कैटलिस्ट है, वैसे मैंने इसके अर्निंग्स देखे नहीं है अच्छे से, कुछ नंबर्स वगैरह अगर अच्छे हैं तो। पर हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे थोड़ा सा डाउट आएगा उस टाइम पर अगर मैं देख रहा हूँ। ठीक है. ओके, वैलिड. कुशाग्र, एनीथिंग यू देयर? Yeah, I'm here. So I don't trade EP and I That's only okay. trade stage Just two. look at it like a normal pullback. Forget EP. Okay. You had Okay, a very cool. big value base. Everyone was probably looking at this 1300, 1500 zone very keenly. Okay. Right. Now you have a big gap up. Forget earnings or anything that we know about it. Okay. Now you Mm-hmm. just have a very big candle on a gap up with huge Right. volumes. Okay. Now if I see these Right. volumes, this is probably the highest volume that we have got after the IPO. In fact, I don't think IPO. So, क्या, whatever Mm-hmm. people call it as HVE or whatever. Okay. Right. Highest volumes, you have gotten a big gap up, kind of faded, and slight pullback Mm-hmm. on the next day. Now, what would you? Right. I would wait for a tight area and I would probably enter if if I am interested in the stock, I would enter at the high of EPK data, right? And probably Over this. wait for. Okay. Oop, no, I would honestly enter if I get a tight area around the highs of this candle. Yeah, So, if we don't get a tight area, we'll skip this. yeah, I will skip it, but that's probably because of lack of knowledge. Yeah, No, no, वो ठीक है. That's okay. yeah, yeah. Dikshit, अभी? I would enter at the high of
this EP candle. But before that, I मतलब want 1680 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तभी तुम कंफर्म कर रहे हो कि एक्चुअली हाँ चल। मतलब अगर ये ऑलरेडी मेरा मिस हो गया है, लाइक हम्म। गैप अप हुआ एंड आई मिस द ट्रेड, तो फिर आई वुड वांट कि एक दो कंसोलिडेशन अगर नहीं हो रहा है तो फिर, एंड इफ देयर इज एन अर्जेंसी, तो ये ईपी नहीं, के आज के हाई दिन के पे ऊपर। बेटा, सपोज यू आर सिटिंग ओके। राइट नाउ ऑन 6th May, वुड यू एक्ट ऑन दिस टुमारो? Not really, unless if it is breaking, if it is going to go up with huge volumes, like volumes चाहिए, अगर बहुत कम volumes वॉल्यूम है। तो तुमको दोपहर के बाद पता चलेगा ना। मॉर्निंग। हाँ सुबह कैसे देखोगे? 9:15 बजे टूटने लगा है। वॉल्यूम कब देखोगे? वो है, उस टाइम पे फिर दोपहर के बाद ही पता चलेगा एक्चुअल हाँ तो वॉल्यूम्स कितने नहीं, योर हैं। फर्स्ट थीसिस आल्सो वाज हम्म 1680 के ऊपर लोगे। ओके, इफ आई हाँ। काउंटर यू, व्हाई नॉट अबाउट 1646, और व्हाई नॉट अबाउट द 5 minute हाई और 1 minute हाई? What would be the earliest point that you can visualize right now for you to confirm breakout? Does it have to be 1680 and above? No, not really. If in a 5 minute chart, अगर like starting के opening में, if I'm seeing good volumes and the next candle of the 5 minute, if it is going up above the first 5 minute candle, and at the same time it is going up above this red candle, ये जो बाजू में है ना, EP के हम्म। next वाला। 1645 वाला। Yes, yes. तो 1645 के ऊपर I will be taking a trade. ठीक है। चिराग, नथिंग? या डेफिनेटली यहाँ पे एक्चुअली मैं एक पुल बैक रीसेट के लिए देखूंगा, बिकॉज उसका कारण इसलिए क्योंकि फर्स्ट डे इट कूल्ड ऑफ। तो ऑब्वियस पॉइंट ये है कि बिकॉज देयर वाज अ कैटलिस्ट, सो आई विल लुक फॉर। जहां तक परमजीत का क्वेश्चन था कि एक क्वार्टर खराब आया तो कैन वी थिंक कि दूसरा क्वार्टर अच्छा हो सकता प्रियांशु है, आई का। विल आंसर। हाँ प्रियांशु। तो मेरा आंसर इसके बारे में कि कभी कभी क्या होता है, जब स्टॉक एक अच्छे अर्निंग्स के साइकिल में होते हैं तो एक अर्निंग्स कभी कभी कुछ वजहों से भी हिट ले लेती है, राइट। तो वो एक कारण हो सकता है। लास्टली यू ट्रेड द चार्ट, राइट। बहुत बार बहुत सारी चीजें हम लोगों को, जब भी वेन एवर यू सी थिंग्स ना, देर विल ऑलवेज बी 2-3 थिंग्स विच आर कंफर्मिंग योर थीसिस एंड अ कपल ऑफ थिंग्स विच आर ऑपोजिट ऑफ योर थीसिस, राइट। तो कई बार व्हेन वी ट्रेड ना, तो कई बार करना क्या पड़ता है, मेरे एक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम थी कि वो जब एक चीज नेगेटिव देखता था ना, तो वो उसके यहाँ ट्रेड नहीं करता था, राइट, बेस्ड ऑन सम assumption थिंकिंग समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उसको एक बात बोली कि हमेशा एक चीज याद रखो कि इफ थिंग्स हैंग इन बैलेंस, एवरीथिंग इज 50-50, राइट, देन ऑलवेज टेक द ट्रेड। इट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट पीपल से, दैट नेवर टेक द ट्रेड, ओनली ट्रेड कि यदि वो 10 टॉप के ट्रेड में आएगा तुम्हारा साल भर के, राइट, 10 टॉप ट्रेड में, देन टेक द ट्रेड। आई विल से द ऑपोजिट। द रीजन इज, सबसे बुनियादी कारण क्या है, मैथमेटिक्स। फर्स्ट रीजन इज कि आप लूज करेंगे तो 1 आवर लूज करेंगे, व्हेन यू मेक मनी यू मेक इन मल्टीपल्स। That is the first thing, right? The second thing is that a 5-star setup or a flawless setup is a myth, ठीक है। और होता क्या, ये जो फ्लॉलेस सेटअप होता है ना, ये एग्जैक्टली तुम देखो तो इसमें फेलियर रेट उतना ही होता है। और कई बार जो रद्दी सेटअप हम लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते, इट स्टार्ट्स वर्किंग दैट केस। सो लास्टली इट इज अबाउट सीइंग थिंग्स जो यहाँ पे आ रहा है ना, और इट इज अबाउट पंचिंग ऑर्डर इन दैट केस, राइट। ये चीज यहाँ पे हो जाती है। ठीक है। सो राइट नाउ द thesis that Chirag also said is we have the right momentum stock but not the right setup. You guys are looking at the setup and not the momentum, correct? Can I ask a question? Sure. So actually, I was thinking about what I just said. Ki I would probably enter and I would treat it as a regular breakout entry, but trying to use the first principle thinking. Hmm. So breakout is essentially when there is a good demand, right? And you can say it overpowers the supply, Hmm. right? Hmm. But in this particular stock, we have had a day like because of EP, right? Hmm. Ki the stock has moved up significantly, Hmm. and so naturally there is going to be some supply. And let's say if I'm, so for the sake of argument, I can't see the price जो EP के candle का low है, right? Hmm. I Hmm. can't see the price on my screen yet, but let's say कि वहां पे, right? It's 1500 Technically, actually. yeah, जो भी है, right? Hmm. I can't see it. 1590, 1560 or something, right? 1513. 1513. EP का Correct. candle का low is Correct. 1513. Okay. Correct. So, for the sake of argument,
if somebody buys at 1513, they're Hmm. not buying at support. It's still a place where you're buying because of sense of urgency, right? Because itne upar gaya hai, so there is going to be natural demand, and if somebody is buying there, I don't think it is support. That being said, I wouldn't buy at 1513 naturally because it feels a bit weird. I Hmm. can't quantify it exactly. But in that sense, what I mean to say is if it is an EP and I feel this is an EP, Hmm. I should probably try to buy a pullback setup than a breakout setup because the sense of urgency is already established in a way. What are your thoughts on it? When you're looking at 1513 now on an earnings day, Yeah. Kushagra, and it has gone up. Yeah. Yeah. ये Yeah. आइडियली हो गया पहले 1 मिनट के अंदर मोस्टली और विद इन द ठीक है. फर्स्ट फाइव Okay. मिनट ओके देन इट हैज गॉन ठीक अप है. ओके ठीक है. नाउ इमेजिन व्हाई डू यू इवन लुक एट अ सपोर्ट पहले तो वो लाइन था फिर जोन बना Hmm. दिया ओके देन इट बिकेम लाइक अ Right. रेंज इट जस्ट केप्ट ऑन एक्सपेंडिंग व्हाट इज द लॉजिक ऑफ अ रेजिस्टेंस और अ सपोर्ट इफ यू एक्चुअली सी फर्स्ट प्रिंसिपल वाइज Okay, now suppose I'm a value Hmm. investor, right? अभी अभी अपना वाला Hmm. discussion करते हैं. The moment Chirag asked us to put a line here, all of us Hmm. subconsciously started looking at this zone. हम्म Correct? Hmm. Why did we start looking at? Because at some point you had an emotional connect or a price anchor at that point कि भाई यहाँ पे मेरा value zone है where my risk reward becomes optimized. Hmm. Correct. Every trade that you are taking, right? Your crucial primary metric for taking that trade is what? It is risk and reward. Whether your reward is commensurate with your risk or not. Correct. With a Hmm. trap trader, ये जब gap down हुआ था ना ये, okay. Why were we taking an actual fake out, shakeout entry? Because you would have taken a very tight stop loss, but if it works, you would have gotten a multiple of your stop loss. ओके Hmm. अभी यहां पे जब तुम लो देख रहे हो ना फर्स्ट क्वेश्चन वेदर दिस इज अ पॉइंट विच एक्चुअली मेक्स इट इमोशनली रेलेवेंट फॉर बिकमिंग अ सपोर्टर रेजिस्टेंस जोन करेक्ट अभी फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस जोन ले लो ओके everyone who would have wanted to sell would have sold to within this rally participation discounting वही बोलता Hmm. ओवर दैट सप्लाई के काउंटर में अगर कोई यहां से 3,000 से लेके अगर 1,300 तक रुका हुआ है एंड इट स्टार्ट्स गोइंग अप अगेन से 2,000 will you actually end up selling at that point Mhm. correct no so your support zone na kushagra here ideally Hmm. means what सपोर्ट अगर थियोरेटिकली टीए में भी लो टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट इज ओनली वैलिड व्हेन इट इज टेस्टेड दिस पॉइंट Right. करेक्ट हम लोग कभी Yeah. भी डे Yeah. लो लेते हैं या ओवर भी लो लेते हैं व्हाट इज द Right. सिग्निफिकेंस ऑफ दैट ओके फर्स्ट इज Hmm. वेदर आवर थीसिस फॉर बाई is validated or invalidated and what is the earliest point that can be the day low breakout bar low 5 minute low whatever you want to take okay Okay. this low Hmm. will people come and defend this point for you at 1513 Hmm. or will they Hmm. defend this for you or will they defend 1300 for you Hmm. so the only way a pullback makes sense is okay कि यहां पे मेरा एक डिमांड एस्टैब्लिश हो गया करेक्ट ये Right. कैंडल पे ऑन द फिफ्थ में कैंडल नाउ इफ Hmm. इट पुल्स बैक टू अ वैल्यू जोन वेयर वी हैव सीन बिफोर correct now can I Hmm. anticipate much higher demand to come here if it consolidates here. It may not be Right. a pretty pattern, but the same Hmm. price which was happening here will have a different reaction of what it will happen here यस Yes. Agreed. because now the context has changed, maybe because of results. But now I'm seeing Hmm. from the charts this value now having some kind of an urgency or the FOMO validation. Hmm. तो मैं यहाँ पे पुल बैक आइडियली वो लोग बोल क्यों रहे हैं पुल बैक आएगा तो वैल्यू जोन पे आएगा जहां पे नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग पीपल टू पुट अ लॉट मोर मनी एंड माय रिस्क रिवॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज हियर Hmm. Yeah. Clears that out for me as well. चिराग कुछ ऐड करना है मैं आगे जाऊँ आगे जा सकते हैं इट इज क्लियर या डैम आई मिस द कैंडल ठीक है चलो आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू वुड एंटर हियर ठीक है आई हैव टेकन द एंट्री टू यहाँ पे नेक्स्ट डे आया चलो बट इट्स क्वार्टेड
ओके, बट ठीक है, आई गो अहेड नाउ। अभी एक्चुअली दीक्षित, अगर तुम यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस लिए होते ना, यू वुड हैव गॉटन चेक आउट। बिल्कुल। करेक्ट। करेक्ट। नाउ अच्छा, यस। नाउ एज्यूम यू हैव शेकन आउट, अभी नेक्स्ट क्या करोगे? यहाँ पे लोगे कि रुकोगे और 3 4 दिन? रुकूंगा, नहीं लूंगा नेक्स्ट ओके, यहाँ पे भी वॉल्यूम्स अच्छा है। डे। स्टिल स्क्वाड एंड 100 डे नेक्स्ट डे। हाँ, आएगा वॉल्यूम से थोड़ा ब्रेक करेंगे। चलो, विल मूव। इट गैप्ड अप अभी। फिर तो बनता ही नहीं है बाय। हाँ। इतना गैप अप पे तो कभी हाँ, बाय तो नहीं गैप अप देख लिया ना सुबह प्री ओपन पे, यू सॉ दिस C4% गैप अप। होता। Now, whatever you wanted to validate on demand, now it is validated here. यस। Okay. यस Now, what is your bias? Every pullback you would want to buy, that would be your default bias, I'm assuming. यस। कभी भी थोड़ा यस। भी नीचे आएगा तुम देखने जाओगे. Okay. Now, यस out of डेफिनेटली। all of this, see our demand bias had already been established here. Okay. यस। But we were slow on execution on 2 or 3 points. यस। Okay. Let's move. बोलो भाई, क्या करूं? आगे जाऊं? कुछ नहीं. So, none of us have an entry. Okay, I'm going ahead again. ये तो तुम्हारा वो प्रदीप बंदे सेटअप आ गया ना, काइंड ऑफ. इफ नेक्स्ट डे इसका हाई ब्रेक होता है then मैं हाँ, वो करूँ। तो टिपिकल सेटअप ले रहे हो. एनी अदर एंट्री यू कैन थिंक ऑफ? चल, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होके नीचे आया तो कैन यू बाय अ शेकआउट एंट्री, और डू यू वांट टू सी अ शेकआउट? Actually, I want to see us check out. It does not come. What do you It want to doesn't come visualize here. the next day for you to buy? Yeah. Is this the only entry that Dixit said? Yeah. Okay, I'll move. I'll move. तो प्रियांशु हो ना? दिख नहीं रहा था कैमरा पे. यस यस सर। ओके. लो भाई, अभी सब लोग कूदेंगे. सब लोग का ऑर्डर इधर ही आएगा अभी 1831 पे. यस। करेक्ट, सब लोग इधर यस डालोगे. ओके. नाउ आई हैव सपोज से 10 crore ऑफ पोर्टफोलियो. ओके. आई नीड टू टेक एटलीस्ट 10% साइज तो मिनिमम लोगे ना कोई भी पोर्टफोलियो में, 5 to 10% भी ले लो. एवरी वन पुट्स इन हियर, कैन यू बाई इट एट 1831? तुम आप फिल मिल जाएगा. नो हार्ड ही है, जब ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक Correct. सा सेटअप है अगर हम देखेंगे तो। हाँ, हार्ड है। सब कुछ है, वॉल्यूम है, टाइट बार है. मतलब अगर कोई मोमेंटम ट्रेडर का वेट ड्रीम है. नाउ व्हाट? नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एंट्री अदर देन दिस? मैं अगर ओपनिंग अच्छा हो रहा है और ओआरबी पे भी ले सकता हूँ, फर्स्ट मिनट कैंडल का हाई ब्रेक होते ही मैं ले सकता हूँ। मैं वेट नहीं करूंगा उल्टा ये डे का हाई ब्रेक करने। ऑल एंटर्ड हियर. हम्म, Yes. ठीक है, है। चलो मैं मार्क कर देता हूँ. यहाँ पे डाल दूँ. Yeah. ओके. चिराग हो ना? हाँ इंटरवीन हाँ एनीथिंग? हाँ. अच्छा, एनी सेल पॉइंट फॉर यू गाइस, एनी पिरामिडिंग पॉइंट फॉर यू गाइस, कि सिर्फ ट्रेल एक करते कॉमन एक कॉमन चीज जो इस चार्ट में, इट हैज अ लॉट ऑफ विक्स, अपर विक्स बहुत है. रहो? या. Using So this till now, even though it is going up, is an okayish movement still. हम्म। Correct, but it is very linear. अगर यहाँ पे लिया होता, यस। you would not have been really troubled.
अभी पुल बैक एंट्री. Yes. So you guys are just looking for a tight candle, no? बेसिकली वही देख रहे हो ना. दैट इज ऑल द सेटअप इज बियॉन्ड द पॉइंट लिमिटेड टू द मोमेंट यू गेट अ NR7 काइंड ऑफ अ कैंडल. दिस फ्लैग इज फॉर NR7 बाय द वे फॉर मी. ओके. कोई भी एक टाइट कैंडल आ जाता है, दिस इज व्हाट आइडियली यू आर लुकिंग फॉर, इसके ऊपर खरीद लोगे. सो ऑल दिस फाइव ऑफ अस ऑन दिस ग्रुप हैव द सेम सेटअप. इज इट? ओके. अभी ट्रिगर हो गया तुम्हारा. करेक्ट बट हम्म अटके हो. शेकन आउट और बचा है किसी का. यस, न्यू क्वांटिटी तो जो न्यू क्वांटिटी ली थी वो तो डेफिनेटली हम एग्जिट कर चुके हैं। हाँ ये और आउट है, ये वाला बचा है. हम्म यस, बट इमेजिन दिस मूव इज स्टिल व्हाट अबाउट 20 odd %. नहीं, हम्म कितना है, 1530 से रफली 2000 ना, तो रफली 25-30 odd %. Okay, we have moved, missed it. Okay, now. एग्जैक्ट। एग्जिट, फुल एग्जिट। Exit. Acha. Now it's gone. First entry is gone. यस। Yes. Okay. Now let us see. Do we have an alternate? By the way, I sold here. ये shit. ये गया हम्म था. हाँ, ठीक है. हाँ चलो अभी. I'm going. Just pause me whenever we want to buy. हम्म First touch to 50. O'Neill. नो, चिराग. आई डोंट थिंक ये फर्स्ट टच टू 50 में बाय करने लायक स्टॉक है। हाँ नहीं नहीं, मैं तो रूल पूछ रहा हूँ. हाँ। नहीं. नहीं है कुछ. नहीं। अभी इम्प्रूव्ड अ कंसोलिडेशन एट लॉट। 50. टाइटनेस इम्प्रूव्ड अ एट. लॉट बट आई विल से कि जो है ना थोड़ा सा मैं और वेट करूंगा बिकॉज इट इम्प्रूव। लास्ट तीन कैंडल इज बायबल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट टू हम्म. समवन वांट्स टू एंटर। बट क्या होता है कि एक ही स्टॉक को देख के उस पे बाय सेल डिसाइड करना और बहुत सारे में इसको चुनना विल बी नहीं वेरी नहीं, रिस्की। assume that is a flaw in this. Let us just go by हम्म। it. ये क्या है लॉजिक. द पॉइंट इज व्हेन वी डू in all the journal, right? तो particular day पे देखेंगे. Now suppose you have say 10 stocks in your watch list. Okay, you took three of them. The seven which you often don't take end up in the top movers. और वो तीन तुम हम्म रिग्रेट करते हो कि भाई वो सेटअप अच्छा था पर स्टॉक नहीं चला. So we हम्म लास्ट थ्री normally. डेज Hmm. लास्ट 3 days had been very good in this case. हाँ. नहीं, so the point is then we end up prioritizing the setup over the momentum many a times within those 10. हम्म करेक्ट. तो इसलिए ये भी जब आ रहा था ना टू एन एक्सटेंट व्हेन दिस शेकआउट हैपेंड, तो अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इफ यू सी ये जो एग्जैक्ट बोला ना विक्स हो रहा है फिर कंसोलिडेशन हो रहा है. दिस वाज नॉट अ वेरी स्ट्रांग मोमेंटम. वी प्रायोरिटाइज द सेटअप हियर. हम्म Yes. Correct. We saw 3 or 4 tight bars coming in and we bought it over the high over range expansion. We didn't buy momentum at all. ठीक है. Momentum actually started here in this case. Okay. I'll go ahead. अभी कुछ नहीं. अभी वॉल्यूम्स। नहीं, वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं है. अभी नो, आई डोंट थिंक। नो. 50 नहीं तोड़ रहा है एक भी बार. कुशाग सी द सपोर्ट लाइन कमिंग इन. Yes, but some definitely something I wouldn't even consider, yeah, at this point. ओके आई मूव. ओके अभी तो गया ना, किसी के पास था नहीं. हम जस्ट मूविंग एहेड. ओके. नाउ इट्स एट 50.
ओके, अभी 50 के आसपास आएगा, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ दिख रहा है? हम्म। डायनामिक सपोर्ट। यहाँ पे कुछ लेना है? एनीवन विद अ कप कुछ? नो, नो वन वांट्स टू ड्रॉ टू कर्व्स। ओके, अभी हाँ, शेक आउट। विल वी प्ले अ फेक आउट? विवेक? Probably if I see a green the next day, like an inside bar, वो तो भाग probably. गया ना ट्रेड तब तक। यहाँ पे Okay. आएगा, फिर वापस कंसोलिडेट करेगा, तुम्हारा एंट्री तो रिटेल एंट्री हो गया ना। Mm. Where's your risk reward in that? Everyone is seeing the same thing. For the last 50 odd candles, all the five of us have literally taken the same setup, same entry point, same trend line. चिराग, कुछ है यहाँ पे? एनीथिंग फॉर यू? नथिंग राइट नाउ, क्योंकि स्टॉक का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। सो ठीक आई है, विल रादर, यहाँ एक शेकआउट ब्रेकआउट एंट्री हो सकती थी, बट इट इज नॉट इम्प्रेसिव। अनदर थिंग इज इट इज वेरी क्लोज टू द अर्निंग्स, वैलिड। दैट इज क्लोज Mm. अनदर। टू yeah. Vivek, you were right, but yeah. But yeah, like he said, close to earnings, so probably I would just avoid it. अच्छा, now Yeah. another earnings breakout. Okay, Abhi. Now let us wait for an entry. Now I'm assuming all of you are excited. Okay, let's go ahead. क्या normal thesis of a pullback? No other entry? Okay. यहाँ मैं विक प्ले एंट्री ले सकता था, बट दैट कुड हैव स्टॉप्ड मी हाँ, आउट। अभी कुछ है? नॉट येट। Mm. किसने प्रियांशु, तुमने बोला था ना एक नेगेटिव बात के ऊपर एंट्री, किसने बोला था? नहीं सर, नेगेटिव बार के ऊपर मैंने तो नहीं। पहले कोई इस पे। अच्छा ठीक है, दीक्षित है, फुकट। ओके, पूरे ट्विटर पे डीले डीपी तो चल रहा है। यू वांट टू पुट दिस? यस। सब लोग इधर यही बोलोगे, अबाउट 2154। सबका सेम एंट्री है वापस? हम्म। नो अदर एंट्री पॉइंट? 5 4 या हो जाएगा। कुछ भी पॉजिटिव ओपनिंग फर्स्ट ओआरबी ब्रेकआउट आई कुड हैव ओके, टेकन। विवेक सेम? Mm-hmm. Positive Kushak is the opening. same, I'm assuming. Yes. Cool. Okay, so all of us are literally here. हम्म। Okay, so you got stopped out here and you have another entry point here. हम्म। Now? Or is और this just weakening? Is this just a bad EP? आई विल स्टिल बाय नेक्स्ट डे। पॉजिटिव गुड ओपनिंग। क्या इसके या ऊपर? टू वन दिस टू इज अ एट नॉर्मल। चिराग, सेम? एनीथिंग डिफरेंट? नहीं, आई थिंक दैट विल बी अ गुड एंट्री एक्चुअली, क्योंकि सप्लाई ड्राइव हुई है। हाँ चलो, हो गया ट्रिगर, यस। बट कुछ हुआ नहीं। ओके, अच्छा यहाँ पे बता दीक्षित, स्टॉप लॉस कैसे लेता? 2128 का बिट डाला ना? ठीक है, आई एम हाँ। अज्यूमिंग 2% स्टॉप लॉस डाला होता, रफली 40 रुपए समझ लो। ठीक है, मैं तो एक्चुअली 1988। डे लो ज्यादा, मैं डे लो का ही प्रेफर करता हूँ हाँ, पर्सनली डे लो। सर। ठीक है, अभी ये दिन पे तुम्हारा क्लोज हुआ है 2122 पे, मतलब वेरी क्लोज टू योर एंट्री प्राइस। हम्म। ओके, नीदर हैज इट हिट योर स्टॉप लॉस, नीदर हैज इट गॉन रिस्क फ्री फॉर यू। हम्म। इट हैज जस्ट नॉट मूव, पूरा दिन यस। एंट्री मार के उधर ही खड़ा हुआ था। क्या करते हैं? राइट राइट। मैं होल्ड करता। होल्ड करते हैं। ओके, यू आर आउट। यहाँ पे तो ऊपर गया ना, यहाँ पे तो स्टॉक कॉस्ट पे ले लेता ना। या अग्री। तो यहाँ पे यू आर आउट। यस। ओके, सो मैं नाउ। ब्रेक इवन पर एग्जिट हो जाता। हाँ, मैं मैं यही कह रहा था, मैं क्या ब्रेक इवन पर एग्जिट हो जाता। हम्म।
नहीं जी, मैं Same स्टॉप here. मूव नहीं करता, बट हाँ अभी मैं स्टॉप होता हूँ। Okay. Now do you have an entry? I will think for one. Yes, हाँ check out probability. Yeah, I will see for one. Next day probably. अभी No, not on this day. Maybe at the high of this candle. हाँ हाँ मतलब यहाँ पे ना 2096 पे. हाँ, high of this. ओके अभी अभी तो बस ये कि क्या सड़ा हुआ स्टॉक है। अच्छा खड़ा हुआ है ना, ठीक है चलो. कुछ एंट्री नहीं है. यहाँ पे ब्रेक मारा तो 2317, अगले दिन ब्रेक किया तो सब लोग डे हाई देख रहे हैं वैसे भी. हाँ, then it is an expanding range breakout. बहुत काउंटर इंट्यूटिव है, बट होता है वैसा भी. अभी यहाँ पे लेते हैं, शायद आ जाता. चलो अभी तो देख हाँ कैंडल तो छोड़ देता हूँ. हम्म, Okay, the point of it was not, this was actually quite an ordinary stock. Okay, we could have easily taken like an Ixigo or a Vimta also out of it. The Hmm. point is, even an ordinary stock, right, will end up giving you multiple opportunities. The skill is not always to grab a 100% move. वो जो एक 20-30% मूव बहुत बार होता है ना, हाउ डज दैट क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इम्पैक्ट, एंड दैट बिकम्स वेरी क्रिटिकल फॉर अ वेरी सीरियस और अ फुल टाइम ट्रेडर. तो Hmm. चिराग का एक बहुत अच्छा लाइन था, रिमेम्बर, वो जब एक 15-20% मूव कैप्चर करके व्हेन हिज पोर्टफोलियो स्टार्टेड मूविंग 10-12%, राइट, दैट इज वेयर अ बिग चेंज हैपेंड. करेक्ट ना चिराग? yes. In this case, if you see, ये पूरा ऑब्जर्वेशन क्या था, वी लिटरली फ्रॉम से फेब 25 to the 7-8 months that we ran through, right, everyone literally went through the same patterns. वही वैल्यू जोन, वही एंट्री, स्टॉप लॉस भी वही लेते, शेकआउट भी वही लेते. ठीक है. Hmm. वी आर ऑल फॉलोइंग द क्राउड बिकॉज वी वेंट थ्रू अ बुक. हम्म, Okay. Post analysis is ideally this. Post analysis is you have taken a trade, right? तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी ट्रेड है. Now at every bar we now keep on reliving of what are the different opportunities that can happen. It will probably happen in less than 10% of the candles. Hmm. Okay. Now whenever you tell me a trade like this, right? यहाँ पे, okay, I just can't take this entry. The moment you get to a 25-30 lakh plus size, you can't take this entry. तुमको फील ही नहीं मिलेगा. You'll need to get creative, either on a lower time frame or some other alternative method where you are identifying both the squat early and the breakout early. Hmm. Correct? नहीं तो on both sides expect a slippage control to be kept. नहीं तो you won't be able to get fills on both sides. And in a stock which is breaking down, right? The slippage on the downside is a lot more than the slippage on the upside. Hmm. तो अगर तुम वो स्लिपेज अगर तुम 0.5 या 1% रखते हो ना, ऑफर ऑफन एंड नॉट ऑन अ शेकआउट स्टॉक, इट इज वेरी बैड. सो से इफ आई टेक समथिंग लाइक दिस, ओके, कल इसमें मैं बच गया, इसमें पोजीशन है, ठीक है. ये जो मारा है ना 20 के आसपास, नॉर्मली आई यूज टू कीप माई जीटीटी अराउंड से डाल देता था. yesterday luckily I didn't have my GTT here. I just Hmm. had an alert and it went up, तो बच गया. अगर यहाँ पे मैंने जीटीटी सपोज ये लो पे डाला होता, व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव एंडेड अप डूइंग, राइट, माय स्लिपेज वुड हैव बीन इजीली 1 to 2%, Hmm. बिकॉज दैट स्टॉक इज नाउ क्रिएटिंग अ क्यूमुलेटिव ऑर्डर वहां पे. Correct. So the point of this whole post analysis was to show how similarly we think because we have read similar books. The point of first principle thinking क्या है पता है? Break down every concept on why you are buying it. So if you are taking a day high here, okay, is there any other point creatively which you can identify the same pattern happening either before or earlier or before or later? Is there any other point if even after confirmation where you get a better risk reward? कल मेरे को एक ट्रेडर ने बहुत और ट्रेड बताया, मेरे को पहले समझ में नहीं आया व्हाई शी टेकिंग इट. देन आई रियलाइज इट लेटर. ये ट्रेड था उसका, ठीक है. शी वॉज जस्ट टेकिंग अ डे ट्रेड ऑन दिस. शी शोड मी दिस चार्ट. वुड यू एवर टेक दिस? करेक्ट, इट वॉज एक्सटेंडेड फॉर ऑल ऑफ अस.
ठीक है, ये Yeah. लेते ही नहीं, ये क्या ले रही है करके। शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे लिया सर, मैं तो मतलब डे ट्रेड के लिए ले रही हूँ, आई जस्ट वांट टू सी वेदर द ओपन इज गुड एनफ, और जैसे ही अगर 0.25% भी ऊपर गया ना, मैं बाई ट्रिगर दिस एंड शी एग्जिटेड यस्टरडे। ओके, शी प्लेड लिटरली द सेम मोमेंटम, यहाँ पे सी दिस, ठीक है। व्हाट डिड शी सी, शी सॉ दिस एज एन इंट्राडे चार्ट, ठीक है। उसको ये दिखा यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा शैली में, ठीक है। यहाँ पे ओपन स्टार्ट हुआ, जैसे ही ये आया ना, हर जीटीटी वाज समवेयर अराउंड हियर, शी वेंट अप। Now she literally played the same thing which was there in Netweb here. This was kind of similar to a Netweb chart on a longer time frame. Very much, very much. ये कल एक्चुअली जब उसका फर्स्ट मैसेज आया था ना ग्रुप में, चला मेरे को समझ में नहीं आया ये ट्रेड क्यों ले रही है करके। आई आस्क्ड हर टू कॉल मी, ठीक है, शी कॉल्ड। आई वेंट ऑन द चार्ट, देन आई रियलाइज कि भाई ये, इवन शी प्रोबेबली डिडंट नो दैट शी वाज टेकिंग दिस ट्रेड, बट इट स्ट्रक मी दैट शी इज लिटरली बीइंग वेरी क्रिएटिव विदाउट इवन नोइंग इट। ठीक है, तो अभी दिस वाज जस्ट अ जिस्ट, ठीक है, विल गो थ्रू दिस अ लॉट मोर। द पॉइंट ऑफ दिस वाज कि कल जब अभी एक्सरसाइज के लिए भी बैठोगे ना, कीप अ कॉमन वन, ओके, वेर ऑल ऑफ यू आर नाउ डूइंग दिस एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, एंड ऑल ऑफ यू नाउ कम आउट विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। This was an exercise, all of you are thinking similarly, so it is very common for you to look at the same entry point, stop loss, same setups, okay, but market knows shit about it. Market does not know Minervini, it does not know VCPs. I'll assure you, as a fund manager, we never looked at a VCP. We looked at value zones and where we need to buy. तो लिटरल ब्रोकर को यही ऑर्डर जाता था कि अगर नेटवेब है ना भाई, 1300 से 1500 के बीच में 1 लाख का माल मेरे को लाके दे, ठीक है। वो फिर अपना जॉबिंग का काम करके अपने नेटवर्क से लेके दे यूज टू गेट मी द स्टॉक, दैट इज एग्जैक्टली द ऑर्डर दैट कम्स इन चार्ट। एवरीथिंग दैट वी आर सीइंग बियॉन्ड द पॉइंट इज ओनली अ कॉन्सिक्वेंस। वी आर लुकिंग एट सेटअप फर्स्ट। तो जब तुम डे हाई देख रहे हो ना, व्हाट इज द डे हाई यू आर लुकिंग एट? पहले ट्रेंड लाइन से स्टार्ट किया था, वहां से देखा ये भाई ये तो बहुत दूर है, थोड़ा नीचे आते हैं, उससे उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं। At the end, we have ended up somewhere between day high and ORB. Why? Because we started with this MFE, MAE concept and started optimizing it. But it is not the ratio that we are optimizing. We are optimizing the earliest point where we can identify the momentum, or the earliest point where we can identify the squat. So MAE, when we are calculating, what does it mean? That journal ratio is very personal for us. Okay. When Dikshit says a zero point 0.5, or say Vivek comes out with a 2.5, 3, okay, it defines two things, where his entry point may be and where I have taken it randomly. Correct? First thing is we are optimizing on our data, but that does not mean we are optimizing on the market as such. Now the situational awareness say tomorrow if I may be bullish on the market, I may have a very different stop loss management. I may not even wait for the day high to break if I'm thinking कि भाई पहला 15 मिनट ही भागने वाला है market. If I know कि भाई gap down होने वाला, I'm not going to look at a day high break. I may actually wait for a shakeout kind of a break. ठीक है, तो यही एवरेजिंग में आता है। एवरी टाइम वी थिंक इट इज पुलिंग बैक, द नॉर्मल इंस्टेंस वाज व्हाट, टू गो फुल फुल टू कैश। तो हम लोग की सबसे पहले गलती क्या होती थी ना, कि भाई स्टॉप लॉस मेंटेन करना है या कुछ भी, ओके। अभी 20, जब कोविड वाला था, द बुल मार्केट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट व्हेन द शेकआउट्स यूज्ड टू हैपन दे वर जस्ट एज स्ट्रॉन्ग। वी स्टिल रिमेंबर द डेट ऑफ August 31st 2020, ठीक है। वो दिन पे आई थिंक ऑल ऑफ अस इन अवर ग्रुप वर एटलीस्ट 15-20% अप इन दैट पर्टिकुलर मंथ। As of 31st August, end of day, we were all zero profit, 100% cash. And how many times has it happened sequentially after that? So I think a very genius line that Chirag came out with, I remember in his blog, was in a bull run, no, stop loss is your weakness. In a bear run, it saves you, or in a choppy market, it saves you. ओके, अभी वेन एवर यू लिटरली, अभी जर्नल तुम लोग पांचों के खोल के देखूंगा ना,
you will find the trades may be different, but the management techniques are the same. And why are हम्म, the trades different? Because you probably use different scans, but you use हम्म, the same method. बट हर जगह वही पाव भाजी मसाला डाला, वही गरम मसाला डाला. इफ आई टेक एनी सब्जी, वो टेस्ट सेम है बियॉन्ड द पॉइंट. Okay, so the point of whenever you are collating or joining in tomorrow, yesterday, is a good exercise will be now to start breaking it from the first principle basis and start getting creative about it. तो अभी जब भी ये लेक्चर भी होगा ना सेकंड वाला, दिस विल बी ऑन से अब चार्ट एनालिसिस काइंड ऑफ दैट विल स्टार्ट गेटिंग इनटू बेसिक्स ऑफ. ओके, नाउ डोंट लुक एट वीसीपीस. ओके, यू नो रेंज कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग टू हैपन. वी आर मैच्योर एनफ ट्रेडर्स टू डू दैट. ठीक है, तुमको पता है कि ऊपर जाएगा, रेंज कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, रेंज एक्सपेंशन होने वाला है. विद इन दैट पैटर्न नाउ सी हाउ वी कैन गेट क्रिएटिव एंड एक्सप्लॉइट अ ट्रैप्ड ट्रेडर, which is the point which is the highest probability for you. So if you see वो टर्टल ट्रेडर वाला कॉन्सेप्ट was the प्योर ट्रैप ट्रेडर कॉन्सेप्ट, कि भाई ब्रेकआउट इतना फेल हो रहा है कि मैं एंटी थीसिस एंटी ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ. It was turtle soup. टर्टल सूप, हाँ टर्टल सूप, हाँ, टर्टल ट्रेडर ही बोलते थे ना उसको, क्या था. टर्टल वाले को टर्टल ट्रेडर को फंसाने के लिए था. हाँ. टर्टल ट्रेडर के ऊपर ट्रैप था. हाँ. क्वाइट नाइस, नाइस बुक, स्ट्रीट स्मार्ट, पढ़ सकते हैं आप तो. हम्म. ठीक है, सो टेक योर फर्स्ट थीसिस व्हेन यू आर लुकिंग एट, देन फ्लिप इट. ओके, हम्म, नाउ एवरी टाइम यू फ्लिप इट, लुक एट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप्स वेयर यू कैन यूज एन अपॉर्चुनिटी. अभी इसे होगा क्या पता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल स्टार्ट डूइंग इज यू विल स्टार्ट चेंजिंग योर स्कैन. You are now not looking at only 52-week high stocks or volatility contraction. You will now start looking at different scans which give you different opportunities. ठीक है, से टेक एन ओला फ्यू डेज बैक. ठीक है, ओला इज अ वेरी टिपिकल बेस ब्रेकआउट, जो लिटरल बॉटमिंग फॉर्मेशन होता है ना. ये जैसे नेटवेब देखा, राइट. Netweb, write down a few stocks. Look at Bsoft. Look at Amber. Look at JBMA a few months back. ठीक है, literally the same bottoming formations more or less everywhere. Bsoft देखना, it looks copy paste of Netweb on a larger time frame probably. Same, spikes आ रहा था. You had your spring formations. You had an EP. It went up. So once you start looking at charts from a different angle, it creates a much stronger procedural memory for it later. Why I got very heavy into Netweb was because of my procedural memory from Bsoft. हम्म, वो जो चिराग ने फर्स्ट लेक्चर में ब्लू डार्ट वाला भी ट्रेड बोला था ना. ठीक है, द एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाज दैट द फ्रेंड दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट, हु सेड कि नहीं ये स्टॉक नहीं लेना है, वाज वन ऑफ देम वाज मी. कि भाई वी हैड डिस्कार्डेड ब्लू डार्ट एंड ही दिस गाय एंडेड अप टेकिंग इट. दिखा अभी सेम पैटर्न. टेक 2023. बी सॉफ्ट में 2023 अप्रैल वाज द ईपी. हम्म, ठीक है, सो गो थ्रू दिस नाउ, कनेक्ट Yeah. टुमारो, कम बैक विथ एन एक्सरसाइज एंड पुट इट ऑन द ग्रुप. विल वेट फॉर दैट.